Hello friends, welcome back to my channel. This is Devika, and in this video I'm going to share with you this glowing party makeup look for college girls. And if you want to know how to create this look, then keep on watching. And another thing, if you like my video, don't forget to give a big like to this video and do subscribe to my channel. So let's get started. So starting with the moisturizer, firstly I'm going to moisturize my face. Winter season is here, तो face को अच्छे से moisturize जरूर कर लीजिए. So applying it in a dot form all over my face and neck ताकि मैं अपने face को अच्छे से moisturize कर लूँ. So for primer, I'm going to use it SFR All Day Primer. Before applying the foundation, you should always apply a very good primer on your face. If you don't have any primer, you can just apply aloe vera gel all over your face. Next for foundation, I'm going to use this Maybelline Fit Me foundation and my shade is Natural Puff. So I'm just applying it on a dot form all over my face, neck. So I'm using this beauty blender and just dabbing all over my face, tap tap tap, ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए ऑल ओवर फेस में और एक नेचुरल लुक देगा. सो डैब डैब डैब, ड्रैग मत करना. After that, I'm using this SFR concealer V-shape palette. These are the shades. These all concealers are very creamy, so I will be just applying it with the help of my ring finger. I know कि बहुत whitish दिख रहा है, but हो जाएगा normal after some time. So I'm just trying the another one, but it doesn't work. So I'm just going back with the same concealer shade, just spreading it evenly. तो लिटिल बिट मैं अपने माउथ एरिया के यहाँ पे भी लगा रही हूँ, चिन जहाँ भी आपको लाइक ब्लैक पैचेस हैं. आफ्टर दैट मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी, बेक कर लूँगी बाय यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन लग्जरी बनाना पाउडर. तो इसे लगा के मैं लाइक 2 to 3 मिनट्स छोड़ दूँगी और बाकी का फेस में कॉम्पैक्ट से बफ कर लूँगी. Compact, Lakme compact. Because my skin is oily, I need to like apply that powder on my face ताकि मेरा फाउंडेशन कंसीलर सब अच्छे से सेट हो जाए. तो जो भी एक्सेस पाउडर था वो हमने डस्ट ऑफ कर दिया जो मैंने बेक किया था. Then moving on to the eyebrows, I'm using this Wet n Wild eyebrow kit, and from that I have taken this
डार्कर शेड। तो सबसे पहले अपनी आईब्रो को अच्छे से कोम कर लीजिए। आईब्रो करने से पहले I'm just drawing line very closer to my eyebrow shape and I'm going to fill in the gaps wherever I need, ताकि वो एक नेचुरल लुक ना दे। ताकि वो एक नेचुरल लुक दे। So you can see the difference. So friends, मेकअप में आईब्रो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट हमारे फुल फेस का। अगर आपको कुछ नहीं अप्लाई करना है, आईब्रो ज़रूर करना। इट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फुल फेस का लुक वो एकदम चेंज कर देता है। Moving on to eyeshadow, I'm taking this dark maroonish shade and I'm using this Morphe Jacqueline Hill palette. So I'm just blending it into and above my crease nicely. Just blend nicely everything because blending plays an important role again. So now I'm taking this brown shade and just going to blend it into my crease in and out. So I'm just forming the V shape and just blending it in and out. And जो भी left over है वो मैं अपने eyelid पे apply कर रही हूँ as a base. After that I'm taking this dark brown shade and just dusting off the excess और इसे भी मैं like V shape करके in and out blend कर लूँगी अच्छे से। After that I'm taking this shimmer shade and just applying it in the center of my eyes. Actually I'm applying this all over my eyelid. So I'm using this brush to blend everything nicely so that there is no harsh line. So I'm just blending everything in and out nicely, taking the same shade. After that I'm taking this orangey shade and just applying it above my crease, just blending it above my crease. After that I'm taking this black color shade and I'm taking this pencil brush and forming the V shape
just dabbing it in the outer corner of my eyes and then going in and out. So doing the same thing on the other eyes. जो भी ज़्यादा है वो आउटर कॉर्नर में ही आपको डैब करना है और जो बचा हुआ है वो इनर में ब्लेंड करना है. दैट्स द ट्रिक. Just to give a smoky look to my eyes. Then I've taken again that same shimmer shade and again applying it on the eyelids. Just blending everything nicely ताकि कोई harsh edges ना रहे. So I'm using this Maybelline Colossal Kajal and just applying it on my waterline. देन से मैं अपना एक आईलाइनर भी ड्रॉ कर लूँगी. सिंपल आईलाइनर, नॉट द विंग वन. And for mascara, I'm using this Maybelline Colossal Mascara. After that I'm again going with the same palette and I've taken that golden shade और मैं इसे अपने टीयर डक में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, like in my inner corners. और इसे मैं अपने पूरे लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी with the help of this angle brush. Then again I'm using that same mascara और लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. To my face, like my full face contouring नहीं कर रही हूँ, only I'm going to apply the blush, the hollows of my cheeks, my jawlines, temples, just to give a sculpt look to my face and my nose as well, ताकि वो स्लिम दिखे.
moving on to highlighter. So to highlight my face I'm going to use this Makeup Revolution highlighter, और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, बिल्कुल क्रीमी है, इसलिए ये ब्रश से अप्लाई हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपने फिंगर से इसे डैब डैब करके स्प्रेड कर लूँगी इवनली अच्छे से। ब्रश से ये हो नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय फिंगर। हाइलाइटर लगाने के बाद एक ग्लो आ जाता है आपके फेस पर, सो डू नॉट स्किप द हाइलाइटर। देन फॉर ब्रॉन्जर, sorry, for the blush I'm using this Sapphire Vivid blush again, and it just have this pink lovely shade, तो इसे भी मैं अपने अप्लाई कर लूँगी एप्पल ऑफ माई चीक्स। आप चाहे तो बिफोर हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। After that, for my lips I am going to use this Huda Beauty lipstick, and this is the dupe one. So before applying lipstick, अपने lips को अच्छे से ज़रूर मॉइस्चराइज कर लेना। Lastly, don't forget to apply makeup setting spray. So friends, this is the final look of this makeup tutorial, glowing college party makeup tutorial. And lastly मैंने ईयरिंग वेयर की है सिल्वर कलर की, और मैचिंग पेयर करके हाथ में एक रिंग वेयर कर ली है। सो आप ऐसे ही कुछ भी मैच पेयर करके वेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा लुक देता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, एंड आई नो बहुत से लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और कमेंट कर सकते हो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि ये एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। सो या टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।